हाँ भाई शुभम जी। हाँ अमित भाई। सर प्रणाम हाँ सर। जी सर, हाँ प्रणाम सर। हाँ देखो जी सर। आए और लोग बाकी का शुरू किया जाए, टाइम से शुरू करें। जी सर, जी सर, जी सर, वी आर स्टार्टिंग। A very warm welcome and a pleasant good evening to our honorable chief guest, distinguished guest, president, guest of honor, respected governing committee members of Joint R&D Center of Fire, Goa and IS Kanpur, esteemed resource persons, faculty members, and all participants who have joined us today from various reputed institutions across the country. आप सभी का इस गरिमामय उद्घाटन समारोह में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। I am Amit Tiwari, Organizing Secretary of this program and currently serving as IT Head and in charge of R&D Cell at Institute of Applied Statistics. It is matter of immense privilege and honor for me to host this inaugural ceremony for 1 month online certificate program on AI for आयुष healthcare and research. आज का यह अवसर केवल एक कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं बल्कि आयुष हेल्थ केयर और रिसर्च में एआई के नवाचार, अनुसंधान एवं ज्ञान विस्तार की एक नई यात्रा का प्रारंभ है। भारतीय ज्ञान परंपरा में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ ईश वंदना से किया जाता है और उसी परंपरा का पालन करते हुए हम सभी आरोग्य, आयु और ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हुए उनके दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करेंगे। For this sacred invocation, I humbly invite Dr. Amrita Nagrakar, PG scholar from the Department of Prasna Sharir from AIIA Goa, to lead us in the divine chanting of Dhanvantri Stuvan. Dr. Amrita, please. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितः पादपद्मम् लोके चरारुभयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधौषधीनां च व्यामवाता वनिवारि च प्रपञ्चात्मभाजं सन्तापसम्पादनान्तकं नमामि धन्वन्तरिमाधिदेवम् लविलनिरमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं मूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमाधिदेवं नमामि धन्वन्तरिमाधिदेवं नमामि धन्वन्तरिमाधिदेवम्। Thank you, Dr. Amrita, for the soulful and divine recitation of Dhanvantri Stavan. With great pleasure and honor, I welcome you all to this inaugural ceremony of 1 month online certificate program on AI for Ayush Healthcare and Research. As we know that this program is being organized under the Joint R&D Center of AIIA Goa and the Institute of Applied Statistics. And as we all know that doctors are the true guardians of health and humanity. Their dedication, compassion, and tireless service towards society inspire us all. On today's special occasion of National Doctors Day, we express our heartfelt gratitude to every doctor for their invaluable contribution in healing lives and strengthening healthcare system. आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के पावन अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कानपुर तथा हमारे सभी सहयोगी संयुक्त केंद्रों की तरफ से देश भर के सभी समर्पित चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं सम्मान। Salute to all doctors, the healers, the protectors, and the silent warriors of humanity. So to take this auspicious ceremony forward, it is my privilege to invite Dr. Shubham Pandey sir for a welcome address. He is presently serving as Project Director of R&D Scheme at Institute of Applied Statistics, Kanpur, as the National Coordinator of Dr. Padam Singh R&D Scheme in collaboration with the ICMR and IS. He has been actively contributing towards strengthening the research capacity and promoting statistical excellence in healthcare. So now I would like to invite Dr. Shubham Pandey sir to extend his warm welcome to our esteemed guests and deliver welcome address. Welcome, sir, and over to you.
Honorable Chief Guest, distinguished guest, President of Inaugural Ceremony, Guest of Honor, esteemed resource person, respected member of the organizing committee, faculty member, and dear participant. A very warm welcome to all of you. It gives me immense pleasure and privilege to welcome you all to the online inaugural ceremony of the 1-month certificate program of Artificial Intelligence for AYUSH researcher, jointly organized by Joint Research and Development Center of All India Institute of Ayurveda, Goa, and Institute of Applied Statistics, Kanpur, in collaboration with CCRAS, New Delhi, and NCISM, New Delhi. Today mark the beginning of a significant academic initiative aimed at bridging the gap between traditional healthcare system and emerging digital technologies. Artificial intelligence is transforming every field of the knowledge, and its integration into the AYUSH healthcare and research open the possibilities for innovation, evidence generation, and patient-centered care. We're deeply honored to have with us Dr. Maneesha Upendra ma'am, Honorable Chairperson of NCISM New Delhi, as a chief guest of this inaugural ceremony. Her inspiring leadership and dedication towards strengthening Indian system of medicine continue to guide us. We are equally privileged to welcome our distinguished guest, Professor Vaidya Rabinarayan Acharya sir, Director General, CCRAS New Delhi, and Dr. Allamprabhu sir, President, Board of Ayurveda, NCISM New Delhi. Their visionary contribution have played an important role in and integrative healthcare research. It is also our honor to have with us the President of CCRAS, Professor Vaidya Pradeep Kumar Prajapati sir, Director, All India Institute of Ayurveda, along with the guest of honor, Dr. G.S. Tomar sir, Director AYUSH Research, and Chairperson Maharshi Charak Research and Development Scheme, and the convener of program, Professor Dr. Sujata Kadam ma'am, Dean, All India Institute of Ayurveda, Goa. Welcome, sir. The Institute of Applied Statistics, Kanpur, is a primary statistical training and research institute. Development in statistics and established with a vision. The gap between the academic learning and the practical application. IS provide the specialization training program, research consultation, and capacity building initiative of the researcher, academicians, and healthcare professionals and the institutions across the India. The Institute of Applied Statistics signed MOU with around 25 leading public and private institutions across the diverse modern medicals, Ayurveda, homeopathy, engineering and management sciences. Through this collaboration, Institute of Applied Statistics provide the consultation for the researcher, healthcare for healthcare projects, develop need-based training program, and provide the methodological and analytical support for research scholars and professionals. With its contribution and multidisciplinary research, state play a role for strengthening the research culture, scientific writing, data analysis, and evidence-based decision making, while promoting the innovation. So, to make the most of the opportunity, engage actively the live session, interact with the expert, participate with the daily quiz, and share the valuable feedback. I confident that this program will enrich your knowledge, strength your research capabilities. Again, I extend my
Welcome to all dignitaries, participants, and wishing a fruitful, insightful, and successful learning journey ahead. Thank you very much once again. Amit, over to you. Thank you, sir. Thank you for inspiring and insightful welcome address. And moving ahead, it is now my privilege to invite Professor Dr. Seema Dwivedi ma'am to share her valuable insight on Joint R&D Center of AYUSH and AIS Kanpur. Ma'am is the National Coordinator of Maharshi Charak Ayurveda R&D Scheme and presently serving as Senior Professor in the Department of Ops and Gynae at GSVM Medical College Kanpur. She is also Distinguished Member of National Medical Wing and serves as the Convener of India Thinkers Society. Our dedication towards academic excellence, research advancement, and student healthcare is truly commendable. So I would now like to invite Dr. Seema Dwivedi ma'am to aware us all about the Joint R&D Center and their working. Please, ma'am, welcome and over to you. Thank you, Amit, for the generous introduction. A very good evening to all of you. Honorable Chief Guest, Dr. Maneesha Upendra Kothekar, our distinguished guest, Dr. R.N. Acharya, Dr. Allamprabhu, our President of Ceremony, Dr. P.K. Prajapati, and our guest of honor, Dr. G.S. Tomar, esteemed faculty members, organizing committee members, and my dear participants. It is indeed a great privilege and honor to be present at the inaugural ceremony of the 1-month certificate program on AI for AYUSH healthcare and research. I extend my sincere gratitude and appreciation to the Joint Research and Development Center of AIIA Goa and Institute of Applied Statistics Kanpur for initiating and organizing this meaningful, innovative, and skill-oriented program in collaboration with CCRAS New Delhi and NCISM under the Maharshi Charak Ayurveda Research and Development Scheme. A significant milestone as this journey was started with the signing of the MOU on 7th April 2026 between AIIA Goa and Institute of Applied Statistics was started for establishing the joint R&D center. This collaboration was envisioned to work collectively towards strengthening evidence-based research, capacity building in the research domain, research recognition for scholars and faculty members, and statistical evidence generation in AYUSH healthcare. The Joint Research and Development Center represents a visionary partnership between traditional wisdom and modern scientific methodology. Over the past few years, under the Maharshi Charak Ayurveda Research and Development Scheme, we have achieved several important milestones. Till date, 8 MOUs have been signed in the AYUSH domain, along with the establishment of many joint state and district training centers and research and development centers. These centers today are actively functioning as hubs for collaborative research projects, training programs, and innovation in AYUSH healthcare. One of our most remarkable achievements has been the training of more than 5,000 Ayurveda research scholars and faculty members through collaborative programs with premier institutions such as AIIA New Delhi, Faculty of Ayurveda IMS BHU, NIA Jaipur, ITRA Jamnagar, and School of Ayurveda DY Patil, deemed to be University Mumbai, among many others. Today, as we inaugurate this program, which is very important, and on artificial intelligence for AYUSH healthcare and research, we stand at the intersection of ancient knowledge and future technology. I encourage all participants to make the most of this opportunity and actively engage and deeply strengthen your expertise in AI so that you can contribute meaningfully to the future of evidence-based AYUSH research. In conclusion, I extend my heartfelt gratitude for all of you for making this program possible. Thank you, and I wish this program a grand success. Thank you so much.
Thank you so much, ma'am, for sharing the vision and objective of the joint R&D center. It's working very beautifully. Thank you so much, ma'am, for your presence. And now we are privileged to have with us Dr. Mohan Ramchand Joshi, sir, Associate Dean, Professor, and Head of the Department of Samhita Siddhant at AIIA, Goa. Dr. Joshi, sir, is distinguished academician, researcher, and expert in Ayurvedic Samhita Siddhant with an impressive academic background, including MD, PhD in Ayurveda Samhita, along with MA in Sanskrita and MBA in Marketing. He is also fellow of GSMC FI MER in 2018. With over 24 years of teaching experience and 20 years of PG teaching experience, sir has made remarkable contribution to Ayurveda education, successfully guided more than 20 PG scholars and currently mentoring 6 PG students along with 7 PhD scholars. In recognition of his excellence in teaching, he was honored with the Best PG Teacher Award at the national level by the Ayurveda Teachers Association in 2025. His contribution to research spans over 15 years, covering both fundamental and clinical research. He has played a key role as chief curriculum developer for the NCISM, contributing the curriculum development for Ayurveda, Unani, Siddha, and Swagaripa at both UG and PG level. So, sir has delivered more than 100 lectures in CMEs, reorientation training programs, and workshops. And now, today, I humbly invite Professor Mohan Joshi, sir, to enlighten us. We request you to share your valuable insights and how emerging AI tools and technologies can strengthen research practice, save times, and open new dimensions for impactful lives, healthcare, and evidence-based research. Welcome, and over to you, sir. Thank you. Respected Director, sir, President of the function, distinguished dignitaries from CCRAS, IAS, and NCISM Chairman, President, Dean AIIA, Goa, and esteemed faculty members, researchers, clinicians, scholars, and dear participants. Namaskar. It gives me immense pleasure to welcome you all for this 1-month certificate program on artificial intelligence for AYUSH healthcare and research. This is the one of the kind officially conducted program of this long duration. As an Ayurveda graduate, I firmly believe that Ayurveda has never opposed, rather accepted all kinds of innovation. Ayurveda opens the access to many other sciences. Like it is said, Ekam Shastram Adhiyano na Vidyat Shastra Nishya, Tasmat Bahushrutam Shastram Vijaniya Chikitsaka. So our Acharyas taught us where whatever is logical, beneficial, evidence-based should be accepted, should be incorporated, and our science should be enhanced with this. The timeless principles encourages us to embrace the knowledge while preserving our core philosophies. So our core philosophies are most important. Buddhi, as we say, is one of the most important. Buddhi sarva gunana. So today, its an enhanced version is artificial intelligence. It is transforming every sector, not just healthcare, but every sector and even healthcare. The question before us is not whether AI will influence AYUSH or Ayurveda, but how AYUSH will shape the future of the AI. Ayurveda, one of the most richest component or one of the most heritage medical knowledge, it is embedded in classical text. There are many kinds of individualized treatment patterns which run across the families, which run across the school of thoughts or principles. Then there are various kinds of assessment which are unique in Ayurveda, like Prakriti kind of assessment and different types, Nadi, Mutra, Malam, Jiva, and different types of assessment. The centuries of clinical expertise which is there in our treatise, and then compendias, and then different books, even up to the Nigantus. AI can help us organize this vast knowledge, analyze the complex databases, discover the hidden patterns, strengthen research,
and gather the high quality evidence while keeping the Ayurveda principles at the center. Whenever the technology came, we have adopted. So initially we were reading the books in the text form. Now they get converted into digital forms. Now they get converted into the softwares, and AI will give us a better age even more than the softwares with its analytical powers. The program has been thoughtfully designed to take participants the fundamentals of AI and practical applications of AYUSH research, including machine learning, statistical data visualization, text mining, even classical literature analysis, and responsible or ethical use of AI. Our vision is to create Ayurveda professionals who are not only rooted in tradition, but also empowered with the technology and with the latest cutting edge technology. Let's AI become the tool, not the place for the physician. So everybody is worried that AI will replace us. No, we will use AI and probably we will enhance ourselves in a better way. I congratulate all the participants for taking this important step towards the future of AYUSH. I'm confident that this program will inspire new ideas, new collaborations, and innovations within our systems, within AYUSH systems. Let's stick together so that ancient wisdom meets the modern intelligence. And together we build the evidence-based, globally relevant Ayurveda future. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you so much for your enlightening address and beautifully highlighted the benefit and scope of AI for AYUSH healthcare and research. I encourage also participants to please do more and more innovation, and when you are lacking, you can contact the supporting institutions. So now at this significant moment, it is my again privilege and honor to invite our esteemed guest of honor, Dr. Professor G.S. Thomas, sir, whose presence truly adds grace and inspiration to this inaugural ceremony. Dr. Thomas, sir, is presently serving as the Director of AYUSH Research at the Institute of Applied Statistics and as the Chairperson of Maharshi Charak Ayurveda R&D scheme. He is also the president of Vishwa Ayurveda Mission and served with the distinctions as a CCRAS Guru at Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth under the Ministry of AYUSH, Government of India. In addition, he holds the responsibility of National Vice President of Ayurveda Bharati also. Dr. G.S. Thomas's illustrious journeys in Ayurveda spans more than 4 decades of dedicated service, including his tenure as principal of the Government Ayurvedic College Study of Prayagraj. His expertise and vision have significantly contributed to the national healthcare and policy-making bodies, including the Technical Working Group for AYUSH NTEP, collaboration under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and the Executive Council of Mahayogi Guru Gorakhnath AYUSH University. With more than 45 years of rich clinical experience, sir has been a guiding force in studying Ayurveda science, education, and evidence-based practice. His immense contribution have been recognized through several prestigious honors, including Shiksha Shri Award, Prayag Gaurav Samman, the Mantri Award, and the Lifetime Achievement Award, along with international recognition through the 20th Century Scholar Award from New York, USA. आज हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के कन्वीनर के रूप में भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर जी.एस. तोमर सर से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें तथा अपने बहुमूल्य अनुभव हमारे साथ साझा करें। स्वागत है सर। धन्यवाद अमित जी। आज भारतीय ज्ञान परंपरा के इस ज्ञान यज्ञ में मैं सभी प्रतिभागियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी संप्रेषित करता हूं। CCRAS NCISM के कोलिबरेशन से हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कानपुर के सौजन्य से ये संपर्क होने वाला हमारा 1 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो कि हमारा विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आयुष हेल्थ केयर एंड रिसर्च के ऊपर संयोजित किया जा रहा है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे ओजस्वी और बड़े कर्मठ हमारे डॉक्टर PK प्रजापति, जो कि डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, साथ ही साथ इसकी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हमारी प्रोफेसर मनीषा कोठेकर,
जिन्होंने कि आयुर्वेद शिक्षा को एक नया स्वरूप देने का जो संकल्प लिया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और डॉक्टर अलमप्रभु गुड्डा जी, जो कि हमारे आयुर्वेद बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं NCISM में, वो आप निरंतर रूप से आयुर्वेद को उच्च स्तर तक पहुंचाने में, आयुर्वेद की गुणवत्ता को, आयुर्वेद की मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए जब से NCISM का जो कार्य आज चल रहा है, उसको आज आपकी इस कार्यक्रम को सभी लोग सराहना करते हैं। मैं पुनः आपका इस अवसर पर बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर शुभम पांडे जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और हमारी जो है सीमा द्विवेदी जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ ही साथ हमारी सुजाता कदम मैम जो डीन है एकेडमिक्स की, ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। जहां तक सवाल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो यहाँ पर एक हमारा एक कार्यक्रम, चूंकि मैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, तो वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में। वो हमारा टॉपिक था डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट फार्मा फॉर विकसित उत्तर प्रदेश। इसका मूल उद्देश्य यही था कि अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन यूटिलाइज डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सामान्य बात उठती है, दो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, each and every system of treatment has got its own strength and limitations, but whatever personally I feel that there is a big difference between the evidence and the praman. Evidence has got the narrow meaning and we have got the concept of the four pramanas: aptopadesh, pratyaksha, anuman and yukti. That's why the knowledge given by the Ayurvedic text is supposed to be eternal, शाश्वत। भूत में भी वही था, वर्तमान में भी यही है, आगे भी वही रहेगा। But we have to explain our principles on the current scientific parameters, keeping the very objective in the mind, because the Ayurveda is not limited between the four walls of the country. Now it has become the global property. So we have to explain it on the current scientific parameters. Here, as far as the artificial intelligence is concerned, it cannot replace our intelligence. It can support, and it learn from the data. Whatever data is available, artificial intelligence will help you. I would like to narrate some important the transformation of the Ayurvedic knowledge. Just I am telling you. We have got the concept of the Sad Kriya Kal, Sanchayam cha Prakopam Prasarma Sthan Sansarayam, Vyaktim Vedam cha Vyakti Dosanam Sabhavid Visak. So this type of the thing can be scientifically validated with the modern scientific tools to enable the prediction of the diseases. We can control the diseases in a primitive stage. Sanchaya apaharta dosa lavante notaragati. So this is the concept of the Ayurveda. It will enriched by the artificial intelligence. Here one most important thing. Could it be possible to utilize the artificial intelligence in the present perspective or not? Is it permitted? Yes, it is permitted. Buddhi yuktam chikitsa sastram yantra buddhya nivartate. It has been already mentioned in our classics. Buddhi yuktam chikitsa sastram yantra buddhya vivardate. Manav pragya sahita Ayurveda prabodhayit. It means medical science empowered by the intelligence expands through machines' intelligence. When united with the human wisdom, Ayurveda enlightens. तो हमको जो है इसका प्रयोग करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा डेटा का क्या है? डेटा एंड प्रमाण, प्रमाणैः सहिता ज्ञानम युक्ता संयोज्य यंत्रतः दोष धातु मलम ज्ञात्वा स्वास्थ्यम स्थापित बुधा। इट हैज ऑलरेडी बीन नरेटेड कि हमको इसको ज्ञान को प्रयोग करना है। नॉट ओनली दिस, द प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस स्वस्थ स्वास्थ्यम रक्षेत पूर्व विचारतः यंत्र ज्ञानम सहायेन रोगान दूरात निवारयेत। बहुत पहले से ही हम रोगों को निवारण कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करने के बाद वी कैन कंट्रोल द डिफरेंट डिसीजेस। If we control the disease in the primitive stage, there is no progression and disease will be cured. Similarly, last में मैं कहना चाहूंगा कि the mantras are also given for the ethical AI in the Ayurveda. न केवलम यंत्र बुद्धि, it has been clearly mentioned. न केवलम यंत्र बुद्धि, न केवलम मानवध्य, उभयो समन्वयेन सिद्धिर्भवत् निश्चितम्. Neither the machine intelligence alone nor the human intelligence alone. Success arises from the harmony of both.
तो हमको प्रयोग करने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए। अंतिम बात आपके सामने कहना चाहूंगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वी मस्ट यूटिलाइज AI एज ए सर्वेंट, नॉट एज ए कहना चाहिए दी मास्टर। हमको सहायक की तरह प्रयोग करना है। इंटेलिजेंस को प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को, अपनी धी को दूर न रखें। तो मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम हमारे प्रतिभागियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और आगे आने वाले समय में हम आयुर्वेद को जन सामान्य की आकांक्षाओं के अनुरूप बना करके वैश्विक क्षितिज पर आयुर्वेद को स्थापित करने में मदद करेंगे। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा मनीषा जी को कि आपके नेतृत्व में आयुर्वेद को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जिसकी हमारी आकांक्षाएं हमारे पूर्व, हमारे चिकित्सकों को, हमारे गुरुओं को रही। प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर रामर सिंह जी का विद्यार्थी होने के नाते ये बहुत ही उचित समझता हूं और आवश्यक समझता हूं कि वी हैव टू एक्सपेंड द आयुर्वेद अप टू दैट कंडीशन दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द मॉडर्न कम्युनिटी टू। With these words, once again, I am very much thankful to Subham Pandey, Dr. Amit, to particularly organizing this type of the program to enlighten our students and expand the knowledge and the utility of the AI in the research. Thank you very much once again. Thank you, sir. Thank you for your profound and inspiring words, and always your visionary leadership and unwavering commitment continues to serve as a strong foundation for the initiatives under the Maharshi Charak Ayurveda R&D scheme. We are thoroughly thankful for your presence and time in this ceremony. Now, it is my great privilege to invite our distinguished guest, Dr. Allamprabhu Gudda, sir, President, Board of Ayurveda, National Commission for Indian System of Medicine. Sir is a distinguished medical administrator and Ayurveda academician, currently serving as the apex regulatory body of Indian System of Medicine. In his role as President of Board of Ayurveda, he plays a crucial role in shaping national policies, academic standards, and development framework for Ayurveda education and institutional growth across the country. Before taking up this prestigious national responsibility, Sir served as the principal of Sri Hingul Lambika Educational Society's Ayurvedic Medical College, where he made remarkable contribution toward academic leadership and institutional development. Under his visionary leadership, NCISM continues to strengthen the quality, governance, and the future directions of Ayurveda education and professional standard in India. हम अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमें सर के सानिध्य और मार्गदर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है इस इनॉग्रल सेरेमनी में. Now, I humbly invite our respected Dr. Allamprabhu Gudda, sir, to address the gathering and share his invaluable insights and blessing with all of us. Welcome and over to you, sir. Sir, please unmute yourself here. Thank you, Tiwari sir. As we all know, today is Doctor's Day. The word doctor is derived from the Latin word docere. In Latin, docere means knowledge. And at the same time, we come across the word therapeutics. It's an English word and it is derived from the Latin word therapeutae. And therapeutae is derived from the word theraputa, which is a Pali language. In Pali language, the theraputa means the knowledge person. And this theraputa is derived from the word stavira in Sanskrit, knowledge. So it's all doctors, it's all indicating the knowledge. So respected chief guest, distinguished dignitaries, esteemed faculty members, healthcare professionals, researchers, and dear participants, ladies and gentlemen. So good evening, everyone. It's both an honor and a privilege to address you on this inauguration of this certificate course on artificial intelligence in AYUSH healthcare and research. A subject that is not merely a technological advancement, but a transformative force that is reducing the future of medicine. Today, we stand at a remarkable point in history. Just as the invention of the stethoscope, Laennec, who invented the stethoscope, he was a scientist. At that time, usually physicians used to put their ears on the chest of the patient to check the heartbeat. Once a lady patient came to his clinic, so he was very shy-natured. He taken a paper and he rolled it, and then he to examine the heartbeat. That started the invention of the stethoscope. Just as the invention of this stethoscope transformed the clinical examination, and we know the discovery of the antibiotics. Antibiotics, Alexander Fleming just found it, and then Florey finally finished it.
and for scientist chain, it purified it for the use of the patients. The discovery of antibiotic revolution is the treatment part, and at the same time, artificial intelligence is poised to fundamentally reshape the healthcare. However, one principle must remain clear. Artificial intelligence will not replace healthcare professionals. Rather, healthcare professionals who effectively use artificial intelligence will lead the future of the healthcare. It may be AYUSH or it may be any other system. Artificial intelligence is no longer a concept confined to laboratories or technology companies. It is already assisting radiologists in detecting the cancers at an early stage, enabling pathologists to analyze the microscopic images with greater precision, supporting ophthalmologists in identifying diabetic retinopathy, helping cardiologists predict cardiac events, assisting pharmacists in optimizing medication safety, and empowering public health authorities to anticipate disease outbreaks through predictive analysis. The true strength of artificial intelligence lies not in replacing human intelligence, but in augmenting it. Imagine a physician who can review thousands of scientific publications within minutes. Imagine a researcher who can identify novel drug candidates in weeks instead of years. Imagine a rural health care center where artificial intelligence supports early diagnosis despite the shortage of specialists. This is no longer science fiction. It is becoming reality of modern healthcare. For researchers, artificial intelligence has become an indispensable partner. Modern biomedical research generates enormous volumes of data through genomics, proteomics, metabolics, electronic health records, and variable devices. Traditional analytical methods often struggle to uncover meaningful patterns from such complexity. Artificial intelligence enables us to discover hidden relationships, accelerate hypothesis generation, improve clinical trial design, identify biomarkers, and facilitate precision medicine. Yet, while embracing artificial intelligence, we must never lose sight of its ethical dimensions. Healthcare is fundamentally built on trust. Therefore, artificial intelligence system must be transparent, explainable, fair, secure, and accountable. Issues such as patient privacy, informed consent, algorithmic bias, cybersecurity, and responsible use of health data are not merely technical concern. They are ethical responsibilities. As future AYUSH healthcare leaders and researchers, we must remember that artificial intelligence can generate predictions, but only human intelligence can exercise judgment. Artificial intelligence can analyze data, but compassion, empathy, ethics, and clinical responsibility will always remain uniquely in human. This certificate course, therefore, is much more than learning software tools. It's an opportunity to develop a new professional mindset, one that integrates medicine, AYUSH medicine, pharmacy, nursing, engineering, biotechnology, data science, and ethics into a unified approach to solving AYUSH healthcare challenges. I encourage each participant not to limit your learning to using artificial intelligence applications. Instead, strive to understand how artificial intelligence works, recognize its limitations, critically evaluate its outputs, and identify opportunities where artificial intelligence can create meaningful impact in patient care, medical education, AYUSH public health, hospital administration, and scientific research. The future belongs to interdisciplinary professionals, those who can combine domain expertise with technological competence. Allow me to conclude with a thought that captures the essence of this journey. The future of healthcare will not be shaped by artificial intelligence alone. It will be shaped by intelligent professionals who use artificial intelligence responsibly, ethically, and compassionately for the benefit of humanity. I congratulate the organizers for initiating this timely and visionary program, and I extend my best wishes to all participants. May this course inspire you to become innovators, responsible researchers, and leaders in the next era of AYUSH healthcare. Thank you very much, and I thank organizers
for inviting me to deliver this few lines. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your inspiring words. As sir said, that we have to do more and more innovation. And I again encourage the participants during the program. If you come with any idea, you need any support, you can contact the Joint R&D Center at AIIA Goa. The whole team is there. Dr. Praveen sir, Dr. Mohan Joshi sir is there. Definitely, you will get a proper guidance how to go for innovation and patent and all things. So thank you again, sir, for your kind words and your presence and sharing wisdom with all of the participants. Now it is immense pleasure and honor that I introduce our next distinguished guest for this inaugural ceremony, our Honorable Professor Vaidya Acharya sir, who is presently serving as Director General of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi. With over more than 28 years of dedicated service in the field of Ayurvedic science, Acharya sir has made outstanding contribution to teaching, research, and policy making. His illustrious academic journey includes serving as professor of the Vibhunath at the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, where he has also served at the head of the department and dean. Professor Acharya sir has played pivotal role under the Ministry of AYUSH, Government of India, including serving as the chairman of the Ayurvedic Pharmacopoeia Committee and national coordinator of the National Pharmacovigilance Program for ASHU drugs. Under his leadership, several important research projects have been flourished with more than 10 grants executed successfully. He has also guided more than 35 PhD scholars and more than 55 PhD dissertations. In recognition of his exceptional contribution, he has been honored with prestigious awards, including the Best Teacher Award for Drug Research Teaching and the Best Paper Award on Literacy Research in Ayurveda by CCRAS. We are equally thankful for his continuous support to the Institute of Applied Statistics in promoting evidence-based AYUSH research through collaborations, capacity building programs, and statistical thinking in making statistical environment among the researchers. I now humbly invite Honorable Professor Vaidya Acharya sir to address the gathering and bless this program with his valuable thoughts and visionary guidance. Please join me extending a warm welcome to our distinguished guest, Honorable Vaidya Acharya sir. Welcome and over to you, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Welcome, sir. Thank you. Due to some technical reason, my video is not on. So at the outset, I thank Dr. Amit for such a long introductions and my regards to Professor G.S. Tomarji, and the founder of this Indian Institute, I can say Indian Institute of Applied Science and Charak Ayurveda Research Organization, most respected Chairperson, NCISM, Professor Kothekar ji, the President of the Board of Ayurveda, Dr. Allamprabhu, Professor Prajapati, Professor Joshi, and Professor Seema Ma'am, and Shubham Pandey, Professor Sujata Kadam, and all respected dignitaries present in this today's inaugural sessions, and also all my dear participants. I can see near about 444 participants have joined the today's program, and I congratulate Indian Institute of Applied Science and also Charak Ayurveda Research and Development Organization for continuing this work since last 4 years. It was first started with biostatistics, research methodology. In continuation to that, now they have entered in the field of teaching our Ayurveda fraternity, particularly the students community, about artificial intelligence, the newly emerged area in healthcare sector. As told by Dr. Allamprabhu, that Ayurveda, through its historical, if you go to the historical perspective, Ayurveda has encompassed many new things into its fold. And it may be the use of a stethoscope, or what told by Dr. Joshi about many new, it may be a new drug or new medication, new methods. Everything Ayurveda has taken into that for good, providing good health and quality healthcare service to the citizens. But here the question comes, why we need artificial intelligence as on today? And we all know that artificial intelligence is nothing but based on the data.
So, when we are utilizing artificial intelligence, we must be cautious that the source data which is being utilized for this purpose is robust and scientific one. If you see today's this year, this is today is the World Health Day, and particularly WHO when celebrates its foundation. It's today Doctors' Day, and that day World Health Foundation. That this year WHO said that Together for Health starts with science. Being established in 1948, an organization like WHO is giving its annual mandate, annual tagline that Together for Health starts with science. As on today, they give the importance of science, and that is the thing that not in Ayurveda, but also in modern field, misinformations and disinformations are a major problem. As in today, everybody in the social media is being a doctor, he prescribes like anything, and if the artificial intelligence, when you put a question, it carries that and give a direction to the practitioner that practice in this way or that way, that is very dangerous. So, taking that into consideration, being a research organizations, we are taking the steps. We are developing a project known as Dravya. Every medicinal plants, which quality and scientific evidence about the use of those plants. We are so artificial intelligence. We must see the source with that. That is another thing. But dear students, I congratulate you all for joining this innovative course, being going to be completed within 1 month, and it is a quite good time to learn about artificial intelligence with a stipulated time and good resource persons. I will request all of you to be more attentive rather than to take a certificate. Be interactive and ask the questions and give feedback to the resource persons, so that in future the Institute of Applied Science or also the Charak, they can modify the course, they can make the course most robust according to the need of the students and the faculty members. With this, I again congratulate and thank Thomas for giving me an opportunity, Sima Madam and Shubhamji, and also Amit for inviting me and keeping CCRAS intact for this purpose. Thank you all. Thank you, sir, for your inspiring and enlightening address, and thank you for encouraging participants to provide feedback after each session, as you all participants would get a feedback form after each session, as well as a quiz for their practice, what they learn in the session after each session. So I encourage all participants also again that please provide a feedback form and try to discuss more and more queries with the resource person during the program. So now comes the most significant moment of today's inaugural ceremony. It is a matter of immense pride and privilege to introduce our Honorable Chief Guest, Dr. Maneesha Gudda, ma'am, Chairperson of National Commission for Indian System of Medicine. Ma'am is a distinguished academician, administrator, researcher, and visionary leader in the field of Ayurveda, with over 35 years of rich experience in teaching, administration, research, curriculum development, and community outreach. As the chairperson of NCISM, ma'am is currently leading the apex statutory body responsible for the shaping policies, regulations, and academic standards for Ayurveda education and practice in India. Alongside this, she has also served as the member of Management Council of the Maharashtra University of Health Sciences. Her illustrious professional journey includes serving as director of the Regional Center, Maharashtra University of Health Science, principal of Sri Ayurveda College, and the professor head at Datta Meghe Ayurveda Medical College Hospital Research Center, Nagpur. Ma'am has also contributed at the national level as former member of the National Commission for Women and National Commission for Youth, Government of India, reflecting her active engagement in women empowerment and youth development. Her academic research contributions are equally remarkable. Ma'am has served as PI in important national level studies, including evolution of professional career for Ayurveda female graduates conducted by NCISM, assessment of professional aspirations among Siddha and Unani female students, a cross-sectional study. Ma'am also worked as a project director in national level study on status of women in India. Apart from her academic excellence, ma'am is also an author of the Marathi book, Umbartya Palyat,
showcasing her literacy contribution also. In recognition of her exceptional service and dedication to Ayurveda, ma'am was conferred with the prestigious Ayurveda Gaurav Samman by the Honorable President of India, respected Honorable Draupadi Murmu ma'am, during the National Arogya Fair in 2026. Ma'am's journey is a true inspiration for all of us, and we are deeply honored by her gracious presence today in this inaugural ceremony. आज हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय है। ये सब प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। With profound respect and admiration, now I humbly invite Honorable Dr. Maneesha Kothekar ma'am to kindly address the gathering and shower her blessing upon all of us. Ma'am, we are really look forward to your inspiring words. Welcome and over to you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। मैं सभी का जो यहाँ पर इनॉग्रल सेक्शन में उपस्थित है, उन सभी पार्टिसिपेंट्स और जो भी इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित है, उन सभी का अभिनंदन करती हूँ और सबसे पहले बधाई देती हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड AIIA गोवा को, जिन्होंने इस प्रकार से 1 मंथ प्रोग्राम का डिजाइन किया और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो समय है उसमें इस प्रकार का एक प्रोग्राम बनाना और अपने आयुष के जो भी विद्यार्थी है, जो भी फैकल्टीज है, जो रिसर्चर है, उनके लिए इस प्रकार का एक ट्रेनिंग देना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सबका सुन रही थी, सब मेरे पहले जिन्होंने बातें की इस सब के बारे में, और मुझे ध्यान आ रहा था कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो पहले तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं उस टेक्नोलॉजी को लेकर। बिल्कुल जैसे मोबाइल का जमाना था, नया था, कंप्यूटर था, तो हर बार एक झिझक सी रहती थी कि ये हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो जाएगा, इससे कोई क्षति तो नहीं पहुंचेगी, या बहुत बार तो ये भी बात हुई है कंप्यूटर को लेकर विशेषतः कि कंप्यूटर के कारण, कंप्यूटराइजेशन के कारण हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा, यानी जो लोग हैं वो इस प्रकार से अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का विषय से लेकर ये हमारे लिए बहुत क्षति पहुंचा सकती है। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के बारे में हर बार कोई नई टेक्नोलॉजी जब आती है हमारे यहाँ बात होती है, पूरे वर्ल्ड वाइड में है, भारत में भी वही स्थिति है। लेकिन हमारा अनुभव रहा है कि हम हर बार इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का जो उपयोग कर रहे हैं वो हमारे प्रगति के लिए कर रहे हैं। ये भारत की एक खासियत है कि जिस प्रकार से एक बिल्कुल अनपढ़ से लेकर बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड सभी लोग इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का अपने अपने तरीके से उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी हमारे मन में इस प्रकार से एक डर पहले था, और इसको लेकर हम किस प्रकार से उसका सामना कर पाएंगे। कोई हमारे सामने कोई इस प्रकार से प्रतिस्पर्धी जिसके बारे में बात हो रही थी ऐसा खड़ा है, ये एक मन में डर था हमारे सबके। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स है, विशेषतः नई जनरेशन जो है, वो जिस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है अपने पढ़ाई में, अपना नॉलेज बढ़ाने में, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छी तरीके से आयुर्वेद को आगे ले जाने के लिए, आयुष को आगे ले जाने के लिए ये इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो 1 मंथ का कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर आयुष हेल्थ केयर एंड रिसर्च, ये टाइटल लेकर हमने जो कोर्स शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिसर्चर्स को भी लाभदायी होगा और उसके साथ साथ हेल्थ केयर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी होगा। जैसा सब लोग बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी वो हमारी क्षमताओं को कम करने के लिए नहीं हो सकती है। हम उसको इस तरीके से ना देखें कि उसके कारण हमारी कुछ क्षमताएं जो नैसर्गिक एबिलिटीज है उसको वो कम करेगी, उसको हैम्पर करेगी। उल्टा हमने उसका इस्तेमाल हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए करना है। एज ए रिसर्चर, एज ए हेल्थ केयर गिवर, इस प्रकार से हमने अगर उसको देखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक प्रगति की ओर हमें ले जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। और जब मैं देख रही थी कि आपका जो कोर्स आपने डिजाइन किया है तो उसमें जिस प्रकार से आपने टॉपिक्स रखे हैं, तो मुझे लगता है कि जो अपेक्षा लोगों की
इसके बारे में है वो पूरा करने की पूरी कोशिश आप लोगों ने इसमें की है। जैसे आपकी जो शुरुआत होती है इस कोर्स की, वो पहले सेशन में आप अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द सिंपल वे, ये बिल्कुल बेसिक जो चीज है वो पहले आपने रखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा देखते हुए कि एक जो भय रहता है उसको निकालना, कि सही सिंपल वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये बताना। यहाँ से लेकर आप आगे जाते हैं, फिर डाटा की जो बात होती है, बहुत बार डर लगता है कौन सा डाटा ऑथेंटिक समझे कौन सा ना समझे, उसको क्लीन कैसे करे, उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो एक सेशन आपका है क्लीनिंग द डाटा, प्रिपेयरिंग आयुष डाटा सेट्स फॉर एआई। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा सबके लिए, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेरे ध्यान में आ रहा है कि बहुत ही अच्छे कुछ टॉपिक्स है इसमें जो सबको बहुत सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और एक बात होती है कि डाटा तो है हमारे पास, बहुत बार ये बात आती है कि हमारे पास काफी सारे एविडेंस बेस्ड डाटा रिसर्च है, बहुत लोग पेटेंट भी लिए हैं, बहुत काम चल रहा है आयुष में भी, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उसको लेकर भी कुछ काम होना चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग विद डाटा, ये आपका जो टॉपिक है मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दिशा में, क्रिएटिंग ग्राफ्स फॉर थीसिस एंड पब्लिकेशन। तो केवल आपका रिसर्च है, बहुत इंटेलिजेंट है आप, आपको नॉलेज भी है उस बात का, लेकिन अगर वो प्रेजेंटेबल वे में आपने सामने नहीं लेके जाते हैं और जिस तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। जो बहुत मुझे लगता है लैक्यूना हमारे यहाँ पर जो है वो ये इसको लेकर है। तो ये टॉपिक के लिए भी मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जिन्होंने ये बनाया है। फिर मैपिंग नॉलेज, हर डिसीज एंड दोष नेटवर्क्स, ये जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से जिसको कस्टमाइज कहते हैं ना, इस प्रकार से आपने जो बनाया है उसको लेकर भी। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स, बायस एंड डाटा प्राइवेसी इन आयुष एआई रिसर्च, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोर्स जो बनाया गया है उसमें जिन्होंने भी रजिस्टर किया होगा और जो एक 1 मंथ का कोर्स करने जा रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि एक अपेक्षा है कि आप लोग इसको ठीक से समझें, उसको अपने नॉलेज में नॉलेज एनहांसमेंट के लिए उसका उपयोग कर ले। और आगे जो हमारे NCISM की तरफ से भी हमारी जो कोशिश रही है हमारे करिकुलम में भी उसको कैसे हम डाल सकते हैं, जो इलेक्टिव्स है या बाकी बहुत सारी चीजें हम ला रहे हैं अभी, तो उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन एक एक्सपर्ट के नाते उसमें हो जाए, इस अपेक्षा के साथ मैं इस कोर्स की तरफ देख रही हूँ। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप जो भी यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं वो एक अच्छा रिसर्चर और अच्छा एक नॉलेज लेकर यहाँ से जाएंगे। इस आशा के साथ मैं यहाँ पर रुकती हूँ और फिर से जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको बधाई देती हूँ। और मुझे यहाँ पर आपकी मेरी जो कुछ बातें थी वो शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मनीषा जी, हमारा ये जो आपने क्यूरिकुलम में MD स्टूडेंट्स के लिए जो आपका बायोस्टैटिक्स का है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, तो वी हैव गॉट ए वंडरफुल टीम। सो वी आर एक्सपेंडिंग द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ द MD स्टूडेंट्स आल्सो। ये हम शाम को कोर्स कराते हैं 6 to 7। तो मैं चाहता हूँ इसी के माध्यम से बच्चों के अंदर जो हमारी स्पिरिट है जी, AI की, डिजिटल हेल्थ की, ये सारी चीजें हम डेवलप कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर coming and blessing the occasion. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much for your encouragement and supporting the program content as we day by day improving the program on the basis of the feedback, on the basis of the suggestion from our committee members and from the guests. So I request again participants that you are very important for us as you provide the feedback regarding the program. On the basis of that only we prepare for the programs. As we in the last program conducted by AIIA New Delhi in systematic review meta-analysis, I'm happy to share that 26 participants who have completed the program, and after that 26 participants now doing their systematic review and meta-analysis, and they are registered their protocol on Prospero. And
with our team support, and we have assigned one mentor from modern medical science and create a collaborative team. As a first author, AYUSH practitioner, they are registered their protocol in mentorship with one modern medical scientist, one statistician, one person from technology. So in that way, we are doing the things. So I again request participants, please do more and more innovation. Come up with your ideas so that we collaborative work on that. And we are always here to support. We discuss. Whenever we need, we connect with the mentors as per your queries or innovation. So thank you again, ma'am, for your gracious presence and sharing your thoughts with all of us. We're really honored, ma'am. So now we move toward the concluding segment of this inaugural ceremony. It is a matter of immense honor and privilege to introduce the president of today's inaugural ceremony, Honorable Professor Vaidya Pradeep Kumar Prajapati sir, Director at the All Institute of Ayurveda, New Delhi. Sir's remarkable journeys, Ayurveda spans more than 3 decades of distinguished service in teaching, research, administration, and policy development. Throughout his illustrious career, he had held several prestigious leadership roles, including Vice Chancellor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Rajasthan Ayurveda University, Director of Institute of Postgraduate Teaching and Research in Ayurveda, Dean and Professor at AIIA New Delhi, and Director in charge of Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine and Homeopathy, and Managing Director in charge of Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited. Sir's academic and research contributions are extraordinary. He has guided 24 PhD scholars and 65 PhD researchers, shaping the generation of Ayurvedic scientists and academicians. His scholarly work includes around 412 research publications, along with books, monographs, and standardization studies that have become important reference in Ayurvedic pharmaceutics. Sir's influence extends globally as well, as a visiting professor at All India Institute of Medical Science and other prestigious institutions, and as invited speaker at international forums in Mauritius, Italy, Sri Lanka, Poland, and Nepal. He has represented and promoted Ayurveda on the global stage with great distinction. Under his dynamic leadership, the All India Institute of Ayurveda has emerged as the national symbol of integrative excellence, where traditional Ayurvedic wisdom meets modern scientific validation and इनोवेटिव रिसर्च। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर वैद्य प्रीके प्रजापति सर से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने अध्यक्षीय संबोधन द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें और अपने प्रेरणादायी विचार हमारे साथ साझा करें। स्वागत है सर। सर आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें। सर अनम्यूट करें। Yes. Thank you. Now I am able to say something. So thank you, madam. My honorable namaskar to all of you, the distinguished member of this inaugural ceremony, Professor, our honorable chairperson of the NCISM, Dr. Maneesha ji, our DG CCRAS, Professor Vaidya Rabinarayan ji, our President NCISM Board of Ayurveda, Dr. Allamprabhu ji, our teacher and guidance provider for all the functions, Professor G.S. Tomar ji, our organizing team, Professor Joshi ji, Professor Sujata ji, Professor Seema Dwivedi ji, Professor Dr. Subham ji, and other distinguished faculty members and the dear scholars. It's our pride privilege to be here on this platform to see so many things has been explained by our experts in relation to the implementation of artificial intelligence in present scenario.
especially for AYUSH healthcare and research. And I am very thankful to Institute of Applied Statistics Kanpur for providing a platform to all my scholars who are looking for the better things. No doubt, it's high time to incorporate these things in our proceedings, or in syllabus, or in curriculum, so that they can enrich or they can develop new ideas along with the AI. So initially, as Madam told, initially we are very afraid that it should be beneficial or not beneficial. Many times it happens. So, but nowadays it is proved that it should be accepted and applied in such a way that we can prove it in a better way. Because in the era of the evidence of the science generation, it is required. We cannot go each and every book, each and every sloka. So AIA is required nowadays. So I think it is a very great point of concern that our scholars, our faculties, uh, persons like me also, because I am also learner in this case, especially in this case. So thank you for providing us such opportunity for the scholars in the form of developing some extraordinary capability, so that we can prove our science in such a way that is acceptable to all. कई सारे प्रमाण हमने, जो तोमर सर ने बहुत सारे बिल्कुल अपने क्लासिकल रेफरेंसेस लाके दिए हमको, तो हमको लगता है कि बहुत सारी चीजें हमको करनी चाहिए, देखनी चाहिए, लेकिन कैसे करें उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें आज हम देखते हैं कि गलती से भी फोन मेरा कभी पॉइंट खुला रह जाता है, तो कोई क्वेश्चन हम किसी से पूछ रहे होते हैं तो उसके आंसर मिल जाते हैं, तुरंत वो आंसर दे देता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है हमको, कि हमारा डाटा जरूर शेयर होता है उससे। डाटा शेयर अच्छे फॉर्म में हो, कोई बात नहीं, वो जाना चाहिए, लेकिन वो कहीं मिस यूज ना हो जाए, इसको जरूर हमें अलर्ट मोड में रह के काम करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि आजकल क्योंकि ऑनलाइन का मीडिया का जमाना है, चीज़ें अच्छी हैं। मैडम और हम सब लोग एक युग को पास कर चुके हैं और अपने सामने ही तीसरे युग को आते हुए देख रहे हैं। आज मोबाइल का एडिक्शन हो चुका है मैडम, आजकल मोबाइल का एडिक्शन इतना जबरदस्त हो गया है कि हमारे बच्चों में हमारे लिए टाइम नहीं होता है, मोबाइल के लिए टाइम होता है। हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं या कहीं क्लास में विजिट कर रहे होते हैं, कहीं लेक्चर ले रहे होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम बच्चे मोबाइल से ही बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेते हैं, लेकिन उसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो दूसरे कामों में लगे होते हैं, तो सेमिनार हॉल में घूम के पकड़ लेते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ इंटेंशन हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जितनी भी हमारी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, वो हमारे को सुपर पावर न करे, इसलिए हमको अपने ब्रेन को भी शार्प करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ साथ हमको उसका यूज करना सीखना पड़ेगा, उसको कहाँ हमें रोकना है, कितना यूज करना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ गई, न्यू कंडीशंस, जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अभी हम जैसे कैंसर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और उसमें ऐसी ऐसी कंडीशंस आ रही है जहां हम कोई भी कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वहां अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमको उसका रूट कॉज मिलता है, तो वो रूट कॉज से हमें ट्रीटमेंट करने में फायदा मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज कंडीशन है। तो आज हमारे लिए क्योंकि हैप्पी डॉक्टर्स डे है, और डॉक्टर्स के बारे में अलम प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, नो डाउट, क्योंकि डॉक्टर्स आज देखते होंगे कि आप हमारे यहाँ तो कंटिन्यूअस हमारे कल्चर में भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा है तो डॉक्टर का ही है, क्योंकि वो लाइफ सेविंग काम करता है। तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों को हैप्पी डॉक्टर्स डे की ब्लेसिंग्स भी देना चाहेंगे सभी को, क्योंकि हम उस फील्ड से जुड़े हुए हैं,
जहां हमें सोशली, इंडिविजुअली और देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए काम करना है। तो इसलिए जितने भी नॉलेज शेयरिंग चीजें हैं उनको हम अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी है अपने पूरी टीम का, भैया गोवा का, कि उन्होंने आगे बढ़ सर के साथ मिलके इस प्लेटफॉर्म से एक सर्टिफिकेट कोर्स, जिस तरह से मैडम ने बताया, आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया, मैडम गो थ्रू की हुई है पूरे सब्जेक्ट में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, उस बिल्कुल सही बात है, उसको ले जाएंगे करिकुलम तक, जिससे कम से कम हमारे सारे बच्चों को एक नॉलेज मिलना चाहिए। हम पढ़ते थे, हम लोग ने बहुत मॉडर्न पढ़ा है, लेकिन मॉडर्न पढ़ा है इस वजह से आज हम आयुर्वेद में यहाँ तक बढ़ गए, क्योंकि हमारी बैक नॉलेज जो मेडिकल साइंस की होनी चाहिए थी वो हमको मिली, और जिसको वो नहीं मिली उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है और मेरा अलग होता है। तो कम से कम हमें इस डिसीजन को लेने में पावर है, डिसीजन लेने के लिए हम सक्षम हैं कि हमें कहाँ तक इस सिस्टम को अप्लाई करना है और कहाँ हमें दूसरे सिस्टम में जाना है। तो ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं, तो हमारे लिए एक्सपोजर बहुत जरूरी है। और जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो उसमें तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नो डाउट। और हमें लगता है कि ये सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद बच्चे काफी कुछ नया करेंगे, क्योंकि सिस्टमिक रिव्यू क्या, जैसा आपने बताया, सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद बच्चों का रिसर्च ओरिएंटेशन, जो लिटरेचर सर्च है उसका ओरिएंटेशन उनका बदला, और वो अब आप अपने यहाँ देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन में आ रहा है हम लोग। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी एक लेक्चर, बार बार हम बच्चों से बोलते हैं कि बेटा हम लोग पढ़ के नहीं सीखे हैं, हम लोग भी वेबिनार, सेमिनार प्रेजेंट करना, कैसे सीखना है, कैसे बोलना है, कैसे खड़ा होने, कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें वहीं से सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि इस तरह के कोर्सेज और भी डिजाइन होते रहे, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है हमको स्किल डेवलपमेंट के लेवल पर। और हमें लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये हम सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसमें जितने भी लोग आए हैं हमारे पास, हमने देखा कि बहुत अच्छे व्यूज़ दिए सभी लोगों ने, आचार्य जी ने, मैडम ने, और प्रभु जी ने, और तोमर सर ने जो बातें कही हैं, अगर इन बातों को, केवल इतनी बातों को भी अगर बच्चे ले लिए तो हमें लगता है कि वो एक बैकग्राउंड बन जाएगा उनके रिसर्च के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी लोगों का कि आपने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ बच्चों के लिए डेवलपमेंट कर पाए। स्पेशली हम तोमर सर का तो आभारी हैं, हम क्या, बचपन से ही आभारी हैं सर के हम कि हम खुद भी सर के स्टूडेंट रहे हैं कहीं ना कहीं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है हमने सर के अंडर में, तो इसलिए उसका आज भी हमको एहसास रहता है। और अप्रोच की बात होती है कि जो अप्रोच सर ने रखी है वो अप्रोच सबके पास होती नहीं है, उस अप्रोच को सीखने की जरूरत है हम सब लोगों को। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी लोगों का, और आप सब लोग स्पेशली इस प्रोग्राम में जुड़े, इसके लिए मैं आप सबको लोग धन्यवाद देते हैं, स्पेशली मनीषा मैडम का, क्योंकि जानते हैं टाइम बहुत मुश्किल है, आजकल मिलता नहीं है, मैडम बहुत बिजी है, हमसे भी ज्यादा बिजी है मैडम तो इसलिए थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर प्रजापति जी। आपने निश्चित रूप से एक नया एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिक्स को, कि हम अपने इस ज्ञान को अपने बच्चों के लिए रिसर्च ओरिएंटेशन हम कर सकें, और बच्चों के ज्ञान को वर्धन करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, रियली यू आर द immense force to implement such type of the programs for the betterment of our students. Thank you very much once again for gracing this occasion. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your sincerely grateful for your gracious presence and guidance. And we are happy that the overall team at Joint R&D Center of Goa and AIS Kanpur, we are very quickly, this program is designed, and thankful to Dr. Mohan Joshi sir and Dr. Praveen sir for coordinating in a frequent way, that in a short time we initiate that program and disseminate to all the institutions across India. And I'm happy that 450 participants are joined
from all over India, from different prestigious Ayurveda institutions in this program. And it credit goes to Dr. Praveen and Mohan Joshi sir for spreading this program to all Ayurveda community in a very short time. So thank you. And now as we move towards the formal conclusion of inaugural ceremony, but we have few speakers. I want to thankful for the speakers who joined. Professor Girish KJ sir, Vice Principal from Patanjali Ayurveda Sansthan. Tomorrow you will learn under sir's expertise. Dr. Tanveer Namesh sir, Deputy Dean from Amity University, who will deliver a few sessions. Dr. P. Ram Manohar, Director, Center of Ayurveda Research in Ayurveda, Amritapuri. Dr. Namita Chaudhary ma'am from Department of AI, Symbiosis International Institute, Pune. Dr. Makina Venkata Lavanya, Assistant Professor from the Department of Math and Statistics, Geetam University. Dr. C.R. Yadav sir, Dean, PhD and HOD, PG Department of Kriya Survey, NIA Jaipur. Dr. Prasanna Kulkarni, Head Clinical Intelligence and Innovation, Labs, Kerala Ayurveda Limited, Bangalore. Dr. Aniruddha Joshi, Founder and CEO, Acharya Innovation Private Limited. Dr. Atul Tiwari, Associate Professor from the Department of Medical Education, Government of Rajasthan. Dr. Surbhi Johri, ma'am, Professor and Head at the Department of Bioscience, MS Ghaziabad. Dr. Prayas Sharma from the BBAU, Central University, Lucknow. Dr. Tripti Shankar from the Department of Computer Application, National Institute of Technology, NIT Raipur. Dr. Ravi Prakash Jha from Dr. Baba Saheb Ambedkar Medical College. Dr. Sailesh Silvan from the Department of CS, Cochin University of Science and Technology. Dr. Mayank Singh from Kelly Academy of Higher Education and Research. Professor Mohan Joshi sir, who will deliver one session in this program also. Dr. Alka Munjal from Department of AI, Symbiosis Institute. Dr. Sumit Goyal sir, Associate Professor and Head from AIIA Goa. Sir will deliver one lecture, and Dr. Hitesh Khurana sir from PGI Rohtak. We're thankful for all the resource person who joined this program and encourage participants, and further they will deliver, they will discuss your queries and doubts. Now it is time to express our gratitude and acknowledge the invaluable contribution of all dignitaries, faculty members and participants who have made this event meaningful and memorable. For this, it is my privilege to invite Dr. Praveen M. Bhatt sir, who is presently serving as Research Coordinator and Associate Professor at the Department of Salakatantra at All India Institute of Ayurveda, Goa. With great respect, and now I humbly invite Dr. Praveen M. Bhatt sir to kindly deliver the vote of thanks. Welcome, over to you, sir. नमस्ते. आदरणीय प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति सर, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली. माननीय डॉक्टर मनीषा कोठेकर मैम, अध्यक्षा भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय पद्धति राष्ट्रीय आयोग. आदरणीय प्रोफेसर वैद्य रविनारायण आचार्य सर, महानिदेशक केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद. आदरणीय डॉक्टर अलमप्रभु गुड्डा सर, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ आयुर्वेद NCISM. आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर GS तोमर सर, निदेशक आयुष एवं अध्यक्ष महर्षि चरक आयुर्वेद अनुसंधान एवं विकास योजना, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, कानपुर. आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता कदम मैडम, अधिष्ठाता शैक्षणिक एवं प्रशासन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा. सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्माननीय संकाय सदस्यगण, शोधकर्ता, प्रतिभागी एवं उपस्थित सभी महानुभाव. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कानपुर तथा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र की ओर से मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर आयुष हेल्थ केयर एंड रिसर्च विषयक एक माह के ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के समापन अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. आज का दिन हमारे लिए विशेष रूप से गौरवपूर्ण है, क्योंकि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे के पावन अवसर पर आयोजित किया गया है. यह दिवस महान चिकित्सक एवं भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति को समर्पित है, जिनका संपूर्ण जीवन चिकित्सा सेवा, शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा. इस अवसर पर हम सभी चिकित्सकों को नमन करते हैं, जो अपनी विद्वत्ता, करुणा, सेवा एवं भाव से समाज के स्वास्थ्य संरक्षण में निरंतर योगदान दे रहे हैं. यह अत्यंत सार्थक एवं प्रेरणादायी है कि आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर हम ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ
कर रहे हैं, जो कि आयुर्वेद की शाश्वत ज्ञान परंपरा को आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जैसे उन्नत तकनीकों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के आयुष स्वास्थ्य तंत्र को नई दिशा प्रदान करेगा। वास्तव में यह कार्यक्रम परंपरा और प्रौद्योगिकी के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं हमारी मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मनीषा कोठेकर मैम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी उद्बोधन से भारतीय चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान तथा गुणवत्ता उन्नयन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। आपके मार्गदर्शन से हम सभी को नई ऊर्जा एवं स्पष्ट दिशा प्राप्त हुई है। मैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वैद्य रविनारायण आचार्य सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने आयुर्वेदिक अनुसंधान, साक्ष्य आधारित चिकित्सा तथा वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाओं पर अत्यंत प्रेरक विचार प्रस्तुत किए। मैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अलमप्रभु गुड्डा सर का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार एवं क्षमता निर्माण के संबंध में आपके विचार हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जीएस तोमर सर का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं सतत प्रयासों से आयुष एवं डेटा विज्ञान के मध्य यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सहयोग संभव हो सका। महर्षि चरक आयुर्वेद अनुसंधान एवं विकास योजना के माध्यम से अनुसंधान एवं नवाचार को नई दिशा देने हेतु आपका योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति सर, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, इनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपके प्रेरणादायी अध्यक्षीय उद्बोधन एवं दूरदर्शी नेतृत्व ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को शिक्षा, अनुसंधान, रोगी सेवा तथा नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित किया है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता कदम मैडम, अधिष्ठाता शैक्षणिक एवं प्रशासन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके सतत मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक नेतृत्व ने ऐसे उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को निरंतर प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहन जोशी सर, एसोसिएट डीन यूजी एवं पीएचडी एवं राज्य समन्वयक संयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की संकल्पना, उद्देश्य एवं आयुष क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अपार संभावनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र की अवधारणा एवं राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से इस पहल को सशक्त बनाया। मैं डॉक्टर शुभम पांडे जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने स्वागत उद्बोधन के साथ साथ इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही मैं प्रोफेसर डॉक्टर विठल उद्धार सर, इंजीनियर अमित तिवारी जी, आयोजन समिति, तकनीकी टीम, संकाय सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं उन सभी सहयोगियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिनके समर्पण, सूक्ष्म योजना एवं अथक परिश्रम से आज का यह उद्घाटन समारोह अत्यंत सफल एवं गरिमामय रूप से संपन्न हुआ है। आज के ऐसे समय में ऐसे कार्यक्रम केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि आयुष चिकित्सा, आधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं नवाचार के मध्य सशक्त हेतु का एक कार्य कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन का माध्यम बन रहे हैं। तो ऐसे में आयुष चिकित्सकों को, शिक्षकों को, शोधकर्ताओं को इन नवीन तकनीकों से जोड़ना समय की आवश्यकता नहीं, बल्कि भविष्य की अनिवार्यता है। तो इस प्रकार की पहले आयुष को वैश्विक स्तर पर अधिक वैज्ञानिक, साक्ष्य आधारित एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यह मैं आश्वस्त करता हूँ। अंत में मैं देश के सभी विभिन्न भागों से जुड़े सभी प्रतिभागियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। आपका उत्साह एवं सक्रिय सहभागिता इस कार्यक्रम की वास्तविक सफलता का आधार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह एक माह का प्रमाण पत्र कार्यक्रम सभी प्रतिभागियों के ज्ञान, शोध क्षमता एवं तकनीकी दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा तथा आयुष स्वास्थ्य सेवा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सभी माननीय अतिथियों, सहयोगी संस्थानों, आयोजन समिति एवं उपस्थित सभी प्रतिभागियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय आइया। धन्यवाद सर, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने हुए। आज का यह शुभारंभ केवल कार्यक्रम का आरंभ नहीं, बल्कि आयुष हेल्थ केयर एंड रिसर्च में ज्ञान, तकनीकी और परंपरा के समन्वय की एक नई यात्रा का प्रारंभ है। कार्यक्रम के समापन की इस मंगल बेला में
हम सभी शांति मंत्र के माध्यम से विश्व कल्याण, आरोग्य और शांति की कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So the next announcement is that first online session will commence tomorrow as per the schedule on 2nd July on the topic Understanding Artificial Intelligence the Simple Way, and it will be conducted under the expert guidance of Professor Girish KJ sir, Vice Principal at Patanjali Bharatiya Ayurveda and Anusandhan Sansthan. The session will lay the foundation of entire program, and therefore I request all participants to kindly join on time and make the best use of this valuable learning opportunity. With this, once again, I extend my heartfelt gratitude to all dignitaries, respected faculty members, organization participants for their gracious presence and active participation. On the behalf of organizing team, we sincerely thank you for your support, encouragement, and continued commitment towards establishing the vision of AYUSH, research and integrative healthcare. We look forward to your active participation of all delegates through this 1 month academic journey. Thank you all. So this is the end of today's inaugural ceremony. We again start with the scheduled first session of this program by tomorrow at 6 p.m. sir. Thank you all. Have a great evening. Thank you all. हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच।